Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in today's video, we will be discussing important current affairs for 30th of August. The session will be quite beneficial for all the students watching this video. So stay tuned with us till the end. It will be very beneficial for all the students preparing for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs for students. We are talking about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. It has recently completed 11 years with 56.16 crore accounts and 2.67 lakh crore rupees that has been deposited. So first thing first, what is this Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana all about, right? What is the main aim of the scheme? Why was this scheme launched? What was the purpose of this scheme, right? This is the largest financial inclusion scheme, and this is to provide every unbanked adult in India with a bank account. So to help unbanked individuals, that is the individuals in India who are not having any bank account, to help them open a bank account. Right? They have with this bank account a financial identity. They have access to services such as your credit, insurance and pension. Right? So Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it has completed 11 years with 56.16 crore accounts and 2.67 lakh crore deposits so far. Now next question can be asked, which is the nodal ministry for the same? It is the Ministry of Finance. It is the Ministry of Finance. Then there is a slogan also students that you need to remember, Mera Khata Bhagya Vidhata. This is the theme that can be asked, or the slogan that can be asked for the same. Right? Also, there was a world record that was set, that is the schemes, this particular Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana set a world record by opening nearly 1.8 crore bank accounts in a single week. Correct? During their launch phase. So this is important students, take a note of this. And among these account, 56% of the accounts that comes under the, or that has been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana belongs to women. Right? So what we are talking about, 11 years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, right, when on 28th of August launched by Prime Minister Narendra Modi, which is the nodal ministry, Ministry of Finance, and the slogan here is Mera Khata Bhagya Vidhata. Then students, tell me who has been appointed as the Director General of Shastra Seema Bal. So Sanjay Singhal has been appointed as the Director General of Shastra Seema Bal. Who has been appointed as the brand ambassador of Echo Insurance? MS Dhoni. Right? Then apart from this students, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Jaguar Land Rover? So PB Balaji appointed as the Chief Executive Officer of of Jaguar Land Rover. Right? Then recently NHAI, they have launched a annual pass of 3,000 rupees. Right? In this 3,000 rupees, you will be getting 200 toll passes. Now the question can be asked here is, name that application that will be providing you this annual pass. It is Raj Marg Yatra. This is the application. Right students? Next. The next news is Ministry of Statistics and Program Implementation. They have released the result of annual survey of industries for 23-24 data, and Tamil Nadu has topped in the number of factories. So question will be asked, which is the state that is leading in the number of factories in India? It is Tamil Nadu state that is leading the charge here. So direct question that can be asked here. Right? Here if we talk about this annual survey, this field work of this survey was carried out during October 24 to June 2025, and Tamil Nadu has secured the top position here as it is leading in the manufacturing sector according to the survey here. If we look at some of the
data here, you can see this amount of capital, fixed capital rose to itne, then invested capital to this amount, then employment, if we see that total employment grew from this number to almost one increase of almost 10 lakh in FY24. Then the GVA, that is gross value added, grew by 11.89% in the current prices in FY24 over the previous year, right? And if we talk about the states in terms of the GVA, Maharashtra was on the first position, followed by Gujarat and Tamil Nadu. One more thing, remember students, Gujarat is the state that is leading in the exports. So question asks that which is the state that is leading in the exports? It is Gujarat, right? Take a note of it. Then another question can be asked, which is the state that is leading in the workforce? It is Tamil Nadu. So 3 questions. Which is the state leading in workforce? Tamil Nadu. Which is the state leading in the number of factories? It is Tamil Nadu. State leading in manufacturing? It is Tamil Nadu. State that is leading in the exports? It is Gujarat. Then apart from this, students, tell me recently which state has launched Atal canteens? Atal canteens. These are the canteens that are providing subsidized food at just 5 rupees. Which is that state? It is, or union territory, it is Delhi, and Delhi's Chief Minister Rekha Gupta has launched this, right? Where is UER2 located? It is in New Delhi. This was inaugurated by recently Prime Minister Narendra Modi. Then apart from this, which IIT licensed the India's first silicon photonics based quantum RNG? So it is IIT Madras. Then which state or which city became the first city to install removable solar panels? Removable solar panels, and they were established between the railway tracks, right? So which is that city that established or installed these removable solar panels? It is Varanasi. It is Varanasi. Then one more thing, remember, if asked about which operation was recently added into the NCERT syllabus, it is Operation Sindoor, right? And here you can see some various data: fixed capital, invested capital, total persons engaged, GVA, total enrollments, and many more. Then moving on, students, DAHD, that is your Department of Animal Husbandry and Dairy, right? They have issued the revised National Action Plan on glanders to control and eradicate various diseases. Right, take a note of this. This is the National Action Plan on the glanders. This is a contagious, this glander, this is a contagious and often a fatal disease that affects your equines, that are your horses, right, and monkeys, donkeys, mules, and many more, right? And with this contaminant measurement, right, the infected zone has been reduced from 5 km to 2 km, and the surveillance area has been reduced to 2 to 10 km, that was earlier 5 to 25 km. And if we talk about this quarantine here, and it has been suggested a rigorous quarantine measures, right, and restriction on the animal movement also from the affected areas, so that this glanders, they do not spread. So what we are talking about? We are talking about a revised National Action Plan on the glanders has been issued by whom? Department of Animal Husbandry and Dairying. Why? To prevent, control, and eradicate the glanders across India in the equids. Moving on. Next, Startup Policy Forum launched India AI in Action podcast. What is a podcast? When individuals are sitting together and they are talking about issues, right? It can be anything here. In this, it can be AI. It can be talking about artificial intelligence, right? So the Startup Policy Forum, they collaborated with India AI Mission under MEITY, and they have launched this AI in Action podcast series in New Delhi that will showcase how Indian startups are using AI to address industry challenges and generate business and social impact. Right, so this is an AI Impact Summit 2026 that will be on in Feb 2026, right? And the objective here is to showcase AI adoption and innovation by the Indian startups. Then recently, if you remember, students, Lok Sabha, they have passed a bill to ban the online gaming, or basically we can say gambling, right? Then UIDAI, they partnered with Starlink. Why? For Aadhaar based customer verification. Then which is the first fully digital literate state under Digi Kerala project? I have given the answer. It is Kerala. Even Goa achieved 100% literacy under Ullas. Right? Tripura achieved 100% literacy under Ullas. Then one more. Tell me which edition of Semicon
India will be held recently. That will be organized on 2nd September. So it will be the 4th edition of the Semicon India. Next is SIA, that is your Satcom Industry Association India. They have signed a memorandum of understanding with Philippines EIAPI for joint research and co-development. I repeat, Satcom Industry Association India, this is a non-profit organization. They signed this MOU with Electronic Industry Association of the Philippines with an aim to deepen cooperation in the fields of electronics, space and satellite communication technologies. So take a note of it, students. Question can be asked regarding this, right? Then with this MOU, the main aim here is to collaborative manufacturing ecosystem should be established between India and Philippines, right? Where electronics manufacturing will be focused upon. Then apart from this, students, tell me, recently HDFC Argo, they partnered with, or let me give you the answer itself. They partnered with PhonePe to launch affordable health insurance for the young adults. Then next is HCL Tech, Pearson India and MEITY Startup Hub. They have partnered to launch Arise for You. Why was this Arise for You launched? This was basically Arise, first of all, stands for Aspire, Rise, Inspire, Skill and Excel. This is an innovation and entrepreneurship challenge for the students that collaborates with Pearson India, MEIY Startup Hub, right? And under this, the youth of India will be promoted so that the entrepreneurship skill can be promoted among them. Under this, a grant of 10 lakh rupees will be provided so that they can carry on with their venture. And here the finale will be held from 12th to 13th of March 2026 and it aligns with the Viksit Bharat mission of India. Correct? So to help the budding startups, to help the young entrepreneurs, correct, this initiative or this partnership was done and Arise for You was launched here. Who has been re-elected as the Boxing Federation of India? President of the Boxing Federation of India, Ajay Singh. Next is, you can see here, Arise for You. Moving on to international affairs, India and Bhutan has signed a memorandum of understanding on technical cooperation in the agriculture and allied sector. So direct question related to it, students, that India and Bhutan, they are coming together and signed an MOU where they will be focused on agriculture and allied sector, where if you remember a few time back, we also signed an agreement where we'll be focusing on the fertilizers export between these two nations and trade will be flourishing in the agriculture sector also now. Then apart from this, tell me recently who has been crowned as the Miss Universe India. So Manika Vishwakarma, she has been crowned as the Miss Universe India 2025. She is from which state? She is from Rajasthan. All these revision questions are quite beneficial and important, students. So do pay attention to them also. And do not skip the video, right? Because you will be missing out on multiple important current affairs. Then who has been appointed as the Delhi Police Commissioner? So Satish Golcha has been appointed as the Delhi Police Commissioner. Moving on, students, to banking and finance. SBI Card and Flipkart, they have launched a co-branded credit card, that is Flipkart SBI Card for seamless shopping. I repeat, SBI Card Payment Service Limited, this is a NBFC. They partnered with Flipkart and e-commerce marketplace and they have launched this Flipkart SBI credit card. With this, what happens is better cashback will be provided on Flipkart, better EMI options will be there, right? And even discounts will be provided here to the customers. Then which country is planning a mission, that is Venera D mission? It will be going to Venus, launched by 2036. It is Russia. Next is Unity Bank and Bharat Pay. They have launched India's first EMI driven RuPay credit card. Very important, students. I repeat, Unity Small Finance Bank partnered with Bharat Pay to launch the first EMI driven credit card, that is Unity Bank Bharat Pay credit card. This works on RuPay network, right? Take a note of it. Then apart from this, if I ask you, Kala Setu, this Kala Setu, why was this launched? Kala Setu, this is an AI driven multilingual content creation program that has been launched in India. Then 11th edition of the India Maize Summit will be inaugurated by Shivraj Singh Chauhan. Question can be asked that which edition of India Maize Summit will be held recently? So it is your 11th edition. Next, economy and business, students. Air India Express became the 4th Indian airline to join IATA. What is IATA? International Air Transport Association, right? Now question can be asked
that which is that organization that became fourth Indian airline, or which airline became the fourth airline to join IATA? It is Air India Express. As it is fourth, so apart from this, first was Air India, then Indigo, then SpiceJet, and now Air India Express. Correct. What are the benefits of joining this IATA? Various access to industry standard tools will be provided here. Then recently 125th birth anniversary of Shama Prasad Mukherjee was observed, and 125 rupees and a commemorative stamp was launched here. Remember this, a commemorative stamp was launched here, right? Then recently young entrepreneurs, right? This is a scheme launched by Punjab in order to teach business skills to the government schools from 2026 onwards. Then Ganesh Utsav is as declared as the official state festival by which state? By Maharashtra. Ganesh Utsav. Next is former RBI Governor Urjit Patel appointed as India's new executive director at IMF. Directly you can see him in the picture here. He is Urjit Patel and appointed as the executive director at the IMF, that is International Monetary Fund. For how long? For 3 years. Next is Railway Board Chairman Satish Kumar gets 1 year tenure extension. I repeat, this will be effective from 1st of September 2025, and ACC approved 1 year extension of Satish Kumar, right, as the chairman and chief executive officer of IRB. Moving on. Next is science and tech students. Pixel and Dhruva Space, they have launched satellites on SpaceX Falcon 9 rocket. So Pixel Space India Private Limited and Indian private aerospace manufacturing company, that is Dhruva Space, they have launched satellites using Falcon 9 rocket of SpaceX. This was a part of the National Advanced Optical System mission. It was launched from Vandenberg Space Force Base in California, USA, right? And here Pixel's 3 Firefly satellite was launched, and Dhruva Space Leap 1 satellite was launched. I repeat, 3 Firefly satellites and Dhruva Space Leap 01 satellites were launched. Now question can be asked, this Leap mission is of which organization? Leap is for Dhruva Space, and Leap is basically launching expeditions with aspiring payloads. Next here you can see that about Leap mission, 2 payloads were launched here. These are the 2 payloads. Next, Dharamveer Preetipal, they have been named India's flag bearer for the World Para Athletics Championship 2025. I repeat, Dharamveer and Preetipal chosen as the flag bearers of the Indian contingent for the 12th World Para Athletics Championship for 2025, scheduled to be held at Jawaharlal Nehru Stadium, right, from 27th of September to 5th of October. Then Gaja Mitra scheme. This Gaja Mitra scheme was launched by which state? By Assam. Next is Neeraj Chopra finishes second in the 2025 Diamond League final. Right, Neeraj Chopra from Haryana, known as the Golden Boy, and he secured second position here in the Diamond League. He threw 85.01 meters. The event was held in Zurich, Switzerland. Right, and who secured the top position here? The winner was Julian Weber. Julian Weber of Germany, and he threw 91.57 meter. This is the season world lead and personal best also for Julian Weber. Moving on. Next is, here you can see the winners, first, second and third, and there is a huge difference of almost 5.5 meters here. Next, important day, students. International Day Against Nuclear Test observed on 29th of July. This day is observed basically that we should avoid nuclear tests, right, and the effect the nuclear weapon test has on the environment. This is the 6th edition of this day that is observed here. Apart from this, if I ask you, World Youth Skills Day on 15th of July, Malala Day on 12th of July, International Day of Hope on 12th of July, World Horse Day on 11th of July, right? Remember these days. Then students, these are your important current affairs. I need to see maximum participation here for the students, right? As we will be moving on to the homework section, I need to see maximum participation. Now let's move to the revision part. It will be quite beneficial for you all. Name the AI-powered summarization tool launched by the Ministry of Panchayati Raj in August to generate structured minutes of meeting from Gram Sabha and Panchayat meeting recordings. So name that AI platform. It is Shabsar. Sabhasar, not Shabsar, Sabhasar. This is the name of that AI-powered summarization tool launched by the Ministry of Panchayati Raj for the minutes of the meetings. Next, in August, India's first dash-powered train cleared the
load test under the design and oversight of Research, Design and Standard Organization at the Integral Coach Factory in Chennai, Tamil Nadu. So it is hydrogen. Right, it is India's first hydrogen powered train. Also, if you remember, NTPC, they launched the first hydrogen powered buses where they were launched in Leh Ladakh. Next, identify the correct statement regarding the quarterly bulletin of the periodic labor force survey for April to June and monthly bulletin of periodic labor force survey for July released by the National Statistics Office in August 2025. So identify the correct statements here. If we see here, all these three options are rightly mentioned. Next, in August, Prime Minister Narendra Modi inaugurated two major national highway projects at Rohini in Delhi. What was the combined approximate cost of these projects? So these projects costed around 11,000 crore rupees. One is your UER2, that is your urban extension road, right? This has been a game changer in connectivity, right? Another is your Dwarka Expressway, that is connecting Dwarka to SPR road, that is Gurgaon. Next, identify the institute that signed a licensing agreement worth 1 crore rupees with Indraka Quantum Technologies Private Limited to transfer India's first indigenously developed silicon photonics based high speed quantum random number generator technology to identify for the commercial deployment. So identify that institute. It is your IIT Madras, Indian Institute of Madras, right? And this agreement is worth 1 CR. Next, in August, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the proposal of Airports Authority of India for the development of Greenfield Airport at where? It will be at the Kota Bundi, that is in Rajasthan. Right, and this will be a 6-lane access controlled capital region ring road in Odisha, costing around 8,307.74 CR. Next, Government of India revised their target to develop an additional 97 gigawatt coal and lignite based electricity generation capacity by which financial year? It will be by FY 34-35, that is FY 35, right? Next, in August, India Post under Ministry of Communication, they have officially rolled out the Advanced Postal Technology System, a 5,800 crore rupees project under India's Information Technology Program, that is IT 2.0. Question asked here is, name the organization that is responsible for indigenous design and development of this APT system. Which is that organization? It is the Center for Excellence in Postal Technology. And a 5,800 crore rupees project under India's IT 2.0 program, building on the project 1.0, enabling faster, smarter and customer-centric postal services will be provided. Next, which American satellite internet provider collaborated with UIDAI in August 2025 to enable Aadhaar-based customer verification? It is Starlink satellite, right? This is the American satellite provider, right? Starlink, owned by Elon Musk, that is basically partnering with UIDAI to enable Aadhaar-based customer verification. Next, identify the authority that opened the 3 Niveshak Seva Kendras in Hyderabad, Telangana in collaboration with SEBI, CDSL, that is Central Depository Service Limited, then NDSL, then BSE and NSE. So identify the authority that opened these 3 Niveshak Seva Kendras in Hyderabad. It is IEPFA, Investor Education and Protection Fund Authority. They partnered with these organizations in order to launch 3 Niveshak Seva Kendras, and these Niveshak Seva Kendras are in Hyderabad, Telangana. Next, mention the organization that signed a 5-year B2B agreement with Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited at Siliguri, West Bengal in August to supply essential fertilizers. So mention the organization that signed this 5-year business-to-business agreement. It is National Seed Center of Bhutan. Next, identify the correct statement regarding the group of ministers accepting center's GST proposal in August 25. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong, right? It is saying that these slabs, they have been now replaced by 2 new slabs, that is 5% and 12%. Is it correct? No, it is 5% and 18% that are the new 2 slabs that have been introduced. Moving on, next, pick out the incorrect statement regarding the launch of the world's largest tribal grassroots leadership program, that is Adi Karam Yogi Abhiyan, by the Ministry of Tribal Affairs in August. Question asked is, we have to find the incorrect statement here. So among the following, A is right, B is right, C is wrong. So hence our answer.
she is saying that the initiative calls for all kinds of volunteers divided in two categories as Adi Mitra and Adi Sarthi. Right? Is it correct? So the volunteers here are known as Adi Sahyogi and Adi Sarthi, not Adi Mitra. Adi Sahyogi and Adi Sarthi. Next, in August, UIDAI they have introduced a new framework to onboard cooperative banks and enable them to deliver Aadhaar based authentication services. Next, the 12th edition of the bilateral maritime exercise SLINEX was held between Indian Navy and Sri Lankan Navy that was conducted in August. It was held where? It was held in Colombo, Sri Lanka. SLINEX. It was held in two phases, your sea phase and your harbor phase. Then next, and one more thing, this was the 12th edition of it. So do remember. Next, India and Eurasian Economic Union comprising Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Russia, they signed a term of reference to launch negotiation on free trade agreement in Moscow, Russia. Next, identify the correct statement regarding the visit of Dr. Dr. S. Jaishankar, that is our External Affairs Ministers, to Russia in August 2025. If we look at the options, we have to find the correct statement. So B is right, C is right, A is wrong. Next, in August, which bank launched a special personal loan scheme for Agniveers? Agniveers was a scheme that was launched by the government of India to provide employment to various individuals. Right? So question asked here is that here, which bank launched a special personal loan scheme for Agniveers providing professional banking services to armed force personnel on the occasion of the 79th Independence Day? Right? It is your which bank? It is State Bank of India, SBI. And the loan amount can here be of 4 lakh rupees up to 4 lakh rupees without any collateral and processing fees. Next, identify the correct statement regarding a report on UPI transactions released by SBI in August 2025. If we look at the options here, option A is right, C is right, B is wrong. It is saying that UPI has stopped among all the Indian states in the UPI usage. Is it correct? So no, the state that has stopped here in the UPI usage is Maharashtra. Next, in collaboration with which payment cards entity did the Bank of Maharashtra launch a co-branded credit card to offer customers a premium and rewarding shopping experience across diverse segments? It is which card? It is SBI cards. Next, in August, the Exim Bank, that is Export and Import Bank of India, they have signed a $40 million commercial credit line agreement with the Africa-based ECOWAS Bank for Investment Development to support the development projects across Asia. So it was a $40 million this line of credit by Exim Bank to Africa's ECOWAS for the infrastructure development. Next, mention the bank that became the first Indian public sector bank to migrate their cooperative website or corporate website to the secure.bank.in. Right, this is the domain to which it is being asked by organization, right, SEBI, that all of them should shift, by RBI has been asked by RBI to all of these banks that they need to shift to this domain for better security. Right, so mention that bank that became the first public sector bank to migrate on this. It is your Punjab National Bank, PNB. Next, mention the bank that launched the UPI services for non-resident external and non-resident ordinary account holders using international mobile numbers. It is AU Small Finance Bank. Next, PFC, that is your Power Finance Corporation, they have signed a 150 million euro loan agreement with Germany's KfW in August to support India's power distribution under what? It is under the revamped distribution sector scheme. Next, the JICA, Japan International Cooperation Agency, they have announced a 40 million investment in the Global Supply Chain Support Fund with an aim to boost small and medium enterprises that are engaged in the global supply chain across Asia and the African region. Next, in August, SEBI, they have extended the timeline for the implementation of framework related to the process of margin obligations through pledge and repledge within the depository systems to which date? To 10th of October 2025. Next, in August, India's credit rating agency ICRA Limited projected India's GDP at what percent for the first quarter of FY26? It is projected at 6.7%. But when USA, when they have imposed tariffs on India, almost 50% tariff, when they will be
enacting, right? And they enacted on 28th of August in India. So after that, there is a high chance that we will be seeing a decline in the GDP. Not much, but a slight drop will be seen here. Next, mention the finance company that sanctioned a term loan of 199.7 crore to Surat Integrated Transportation Development Corporation Limited for developing India's first international standard multimodal transport hub in Surat, Gujarat. So mention the finance company that we are talking about. It is IRFC, Indian Railway Finance Corporation. Next, students, is our homework section. First question is, tell me recently India's first National Cooperative University will be set up where? Second question, tell me recently, if I ask you Digi Lakshmi scheme, this was launched by whom and by which state, and why was this launched? Third, poverty free village scheme, this was launched by whom and why was this launched? Fourth question, which is the first Amazon country that was declared malaria free by World Health Organization? Fifth question, tell me recently, what is the rank of India according to World Bank in the world's most equal societies? So what is the rank of India here? And sixth question, name the countries that has joined the new development bank of BRICS. 2 countries have joined, name them. So that's all for the day, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स में हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से। ये बेसिकली स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी अगस्त 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एंड इसके अब 2025 में 11 साल पूरे हो गए हैं। इसका एम क्या था? लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना, राइट? जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट खुलवाना। बैंक अकाउंट खुलवाने से होगा क्या? उनकी एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन जाएगी। उनको वेरियस सर्विसेज जैसे क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, वो इस सब का बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट? एंड यहाँ पर 56.16 करोड़ अकाउंट खोले गए, जिसमें से 11 साल में से जो 56% है वो वीमेन के अकाउंट्स यहाँ पर खोले गए हैं, एंड 2.67 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे इस अकाउंट्स में डिपॉजिट हुए। इसी के अलावा एक स्लोगन याद रखेंगे इस प्रधानमंत्री जनधन योजना का, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये स्लोगन है, यहाँ पे मार्क करके चलेंगे। एंड 13 अगस्त को इसके पूरे 11 साल यहां पर हो गए हैं, राइट स्टूडेंट्स? फिर इसी के अलावा आपसे अगर पूछा जाए, अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया, वो मार्क करके चलेंगे ताकि जीनोमिक रिसर्च के ऊपर काम किया जा सके, राइट? फिर इसी के अलावा काला सेतु ये लॉन्च किया गया। ये एक एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जो बूस्ट करेगा मल्टीलिंगुअल कंटेंट क्रिएशन को इंडिया में। देन शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा 11वां एडिशन ऑफ मेज इंडिया या फिर इंडिया मेज समिट को यहाँ पे लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया मेज समिट लॉन्च हुआ था, तो 11वां एडिशन था। देन इसी के अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है वो है मोल्डोवा, राइट? ये आपका होमवर्क है। मुझे बताओ कौन से नंबर का कंट्री है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया? मोल्डोवा ने। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने रिलीज किया रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24 का डाटा, जहां पे तमिलनाडु ने टॉप किया इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। देखो यहाँ पे इस पूरी न्यूज का ना 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। चलो 4 चीज। सबसे पहली चीज आ जाती है कि किसके द्वारा ये रिजल्ट, ये एनुअल सर्वे रिलीज किया गया इंडस्ट्रीज का, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। फिर आ जाता है क्वेश्चन की कौन सी स्टेट टॉप करी है इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, वो है तमिलनाडु। फिर आ जाता है नंबर ऑफ वर्कफोर्स में
टॉप कौन कर रही है यहाँ पे, राइट, जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं वो है तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिला, कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला जीवीए में, फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु। फिर एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, एक्सपोर्ट्स में कौन सी स्टेट लीड कर रही है, तो वो है गुजरात। हमने कल भी ये डिस्कस किया था, गुजरात लीड कर रही है इन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स। राइट स्टूडेंट्स, टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए, इसी के अलावा आपसे अगर एक और क्वेश्चन मैं पूछूं, अच्छा इससे पहले ना ये कुछ डाटा है, ये देख लो, फिक्स कैपिटल कितने से कितना हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना हो गया, पर्सन्स एंगेज कितने हो गए, टोटल एनरोलमेंट्स कितने हैं, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, ये FY23 का, ये FY24 का, राइट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे पंजाब के द्वारा अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जो कि है यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स। ये स्कीम है बेसिकली कि गवर्नमेंट स्कूल्स में 2026 से बिजनेस स्किल्स को बच्चों को सिखाया जाएगा। फिर पंजाब में ही याद रखेंगे मुख्यमंत्री, एक स्कीम लॉन्च की गई जो कि है मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना। ये स्कीम बेसिकली पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई जहां पे 10 लाख का यूनिवर्सल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इनके द्वारा इशू किया गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्लैंडर्स। ये ग्लैंडर्स बेसिकली एक डिजीज है जो कि आपके एक्विन्स को जाती है, जैसे म्यूल हो गए, गधे घोड़े हो गए, इनको होती है, एंड इसके लिए एक्शन प्लान यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहीं पे आप देखेंगे जो कंटेनमेंट एरियाज यहाँ पे बनाए गए हैं एंड जो मूवमेंट है एनिमल्स की उनको रोका गया ताकि जो स्प्रेड है डिजीज का वो ज्यादा ना हो सके, क्योंकि ये काफी डेडली डिजीज बताई जाती है। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर इसी के अलावा आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्टार्टअप पॉलिसी फोरम, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया एआई इन एक्शन पॉडकास्ट को। पॉडकास्ट क्या होता है, जब लोग यहाँ पर बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड ये एआई पॉडकास्ट रहेगी जहां पे स्टार्टअप्स को, यंग स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को राइट गाइड किया जाएगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट ला सकते हैं एंड कैसे एआई इंडिया में स्टार्टअप्स एआई को यूज कर रहे हैं एंड उससे क्या इंपैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्या नई R&D इस पे हो रही है, क्या नई यूज केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं, राइट, उसको दर्शाने के लिए ये पॉडकास्ट होगी जो एआई का बेनिफिट दिखाती, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टअप पॉलिसी फोरम इन्होंने इंडिया एआई मिशन के साथ यहाँ पे पार्टनर किया एंड लॉन्च किया इंडिया एआई इन एक्शन, ये पॉडकास्ट सीरीज है जो यहाँ पे लॉन्च की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे MEITY ने साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक MOU साइन किया, बेट्स पिलानी के साथ ये MOU यहाँ पे साइन किया। नेक्स्ट एक और चीज याद रखेंगे, गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, राइट, ये महाराष्ट्र का अभी स्टेट फेस्टिवल बन गया, ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल यहां पे बन गया है गणेश उत्सव। नेक्स्ट SIA इंडिया जो कि है सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया, इन्होंने, ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक MOU साइन किया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ फिलीपींस के साथ, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर काम किया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके एंड स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में, राइट। कोलैबोरेशन बढ़ सके, पॉलिसी मेकिंग बढ़ सके, राइट, टेक एंथुजियास्ट एक दूसरी कंट्रीज में आ जा सके, करेक्ट। एंड ये इवेंट एआई इंपैक्ट समिट 2026 में होगा, फरवरी 2026 में, जहां पर ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे ताकि हम फर्दर ग्रो कर सके, राइट। क्योंकि हमने देखा था अभी इसी से रिलेटेड, अगर आपको याद हो तो इंडिया एआई एक्शन पॉडकास्ट हो रहा है, राइट। तो ये कब हो रहा है, ये भी एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान होगा फरवरी में, राइट, जिसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि क्योंकि एआई आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, देखो न्यूज को लिंक करो, एआई का इंपैक्ट हर सेक्टर में होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस हो, इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ईजी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर बनते हुए देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा तेजी आती हुई दिखेगी, राइट, क्वांटम फील्ड्स में, कम्युनिकेशन में, साइबर सिक्योरिटी में एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में हमें एआई का यूज होगा। तो ये जो एआई इंपैक्ट समिट है ये एक बहुत क्रूशियल इवेंट रहने वाला है, जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड हम इंडिया में देखेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो एआई टूल्स हैं उसका क्या इंपैक्ट, कैसे उनको यूज करके हम बेटर यूज केसेस ला सकते हैं, उनका क्या इंपैक्ट हम जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो मार्क करेंगे SIA इंडिया ने MOU साइन किया फिलीपींस के EI API के साथ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में, जहां पे AI का भी यूज होता हुआ दिखेगा ताकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तेजी से हो सके।
नेक्स्ट HCL टेक एंड पियर्सन इंडिया, इन्होंने MEITY स्टार्टअप हब के साथ पार्टनर किया ताकि अराइज फॉर यू प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। अराइज क्या है? एस्पायर, राइज, इंस्पायर, स्किल, एक्सेल फॉर यू। ये एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे कोलैबोरेट किया जाएगा HCL टेक्नोलॉजीज के द्वारा पियर्सन इंडिया एंड MEI स्टार्टअप हब के साथ। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है यूथ की, उसको ग्रो करने का काम किया जाएगा। उनको हेल्प की जाएगी कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सके, जैसे IoT, राइट, आपके अलग AI सेक्टर में, क्योंकि हम देख रहे हैं AI आज का एक फियर्स टॉपिक है, राइट। तो कैसे हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकते हैं, यूथ को हम यहाँ पे एंकरेज कर सकते हैं। इवन इसके अंदर हम देखेंगे जो प्राइज मनी रहेगा विनर्स के लिए, करेक्ट, इस अराइज फॉर यू के लिए, वहां पे 10 लाख रुपए तक का ग्रांट भी दिया जाएगा ताकि फर्दर वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अफेयर्स पे। इंडिया एंड भूटान ने अभी एक MOU साइन किया टेक्निकल कॉपरेशन के लिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ट्रेड फ्लरिश होता हुआ दिखेगा दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। चाहे वो आपके जैसे आपके DAPs हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, राइट, इसमें इवन जो गुड्स होंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसमें भी यहाँ पर हमें ग्रो होता हुआ दिखेगा। एंड एग्रीकल्चर को स्टोर करने के लिए जो आपके वेयर हाउसेज हो गए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसी से रिलेटेड हम देख रहे हैं आजकल IoT डिवाइसेस, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, इन सब का यूज किया जा रहा है, तो उसमें भी यहाँ पे कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे अभी रिसेंटली तलाश ये लॉन्च किया गया, तलाश लॉन्च किया गया ताकि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके विद रियल लाइफ स्किल्स, एंड इसके लिए यूनिसेफ का यहाँ पे हेल्प मिलेगा। देन नेक्स्ट आ जाता है गजा मित्रा स्कीम। ये गजा मित्रा स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। देन फिर प्रसार भारती ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि स्पोर्ट्स को नेशन वाइड बूस्ट किया जा सके एंड हैंडबॉल को प्रमोट किया जा सके ग्लोबली। देन अभी यूनेस्को ने किस हेरिटेज साइट को ऐड किया? किस साइट को ऐड किया इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, जो कि इंडिया की 44th एंट्री बन गई है? तो वो है मराठा मिलिट्री फोर्ट, ठीक है, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। SBI कार्ड, फ्लिपकार्ट, इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि है फ्लिपकार्ट SBI कार्ड। इससे क्या होगा? फ्लिपकार्ट पे अगर इस कार्ड के थ्रू शॉपिंग करेंगे तो काफी ज्यादा कैशबैक देखने को मिलेगा, डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बेटर पेमेंट प्लान्स यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। एंड इससे क्या होगा? SBI को भी बेनिफिट मिलेगा कि उनके जो यूजर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, राइट, उनका क्रेडिट यूटिलाइज होता हुआ हमें यहाँ पे दिखेगा। मूविंग ऑन, फिर यूनिटी बैंक एंड भारत पे ने लॉन्च किया इंडिया का पहला EMI ड्रिवन रुपे क्रेडिट कार्ड, राइट। यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड रहेगा, ये पहला EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड है जो कि रुपे नेटवर्क पे वर्क करेगा, राइट। यहां पर हम देखेंगे 21 से 65 साल के लोगों को यहाँ पे ये डिलीवर किया जाएगा एंड मिनिमम 2.5 लाख रुपीज सैलरी इनकम होनी चाहिए एंड 5 लाख रुपीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, तो उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये रहेगी ताकि उनको ये कार्ड मुहैया कराया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंक इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। एयर इंडिया एक्सप्रेस ये 4th इंडियन एयरलाइन बनी जिन्होंने IATA को ज्वाइन किया। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राइट। एंड इससे ये 4th इंडियन कैरियर बन गया। पहला था एयर इंडिया, देन इंडिगो, देन स्पाइस जेट एंड अब ये 4th बन गया एयर इंडिया एक्सप्रेस। इससे क्या होगा? जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स हैं उनका एक्सेस यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिलता हुआ दिखेगा, जिससे पैसेंजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, बैगेज हैंडलिंग बेटर होगा, बुकिंग बेटर होती हुई दिखेगी एंड जो कनेक्टिविटी है, राइट, वो और स्ट्रेंथन होती हुई हमें दिखेगी। नेक्स्ट, फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल, इनको अपॉइंट किया गया इंडिया का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, राइट, एंड इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए, करेक्ट। देन अभी किनके द्वारा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव इनॉग्रेट की गई? कहां पर? विशाखापट्टनम में इसको इनॉग्रेट किया गया। किनके द्वारा? सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा करा गया एंड ये 2nd एडिशन रहेगा बिम्स्टेक पोर्ट एनक्लेव का। देन रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, ACC के द्वारा ये अप्रूवल आया, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी के अलावा याद रखेंगे IIFL होम फाइनेंस, इन्होंने $100 मिलियन का फंडिंग सिक्योर करी है। कहां से? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। इससे यहां पे इनको $100 मिलियन मिला है ताकि फर्दर ये अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर सके। देन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन हुआ है जहां पे फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स को ट्रेड किया जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। हम बात कर रहे हैं पिक्सल स्पेस, राइट। पिक्सल स्पेस ये बेसिकली एक
एरोस्पेस कंपनी है, इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्होंने ध्रुवा स्पेस के साथ पार्टनर किया है ताकि सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। अगर मैं बात करूं पिक्सल की 3 फायरफ्लाई सैटेलाइट्स लॉन्च की गई एंड ध्रुवा स्पेस की लीप 01 सैटेलाइट्स को यहां पे लॉन्च किया गया फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। एंड ये सब किया गया अंडर NAOS मिशन, जो कि है नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं धर्मवीर एंड प्रीति पाल, इनको नेम किया गया इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। ये 12th एडिशन रहेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में न्यू दिल्ली में, राइट। एंड धर्मवीर एंड प्रीति पाल को फ्लैग बियरर्स यहाँ पे अपॉइंट किया गया। मार्क करके चलेंगे इसको स्टूडेंट्स। ये इवेंट 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। 107 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा एंड ये लार्जेस्ट एडिशन यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखेगा। एक और चीज, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक AI इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करी है एज पर द डाटा रिलीज बाय WHO। फिर अगर क्वेश्चन पूछूं IPO फंड रेजिंग में NSE कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, 4th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, इन्होंने फिनिश किया 2nd इन द डायमंड लीग फाइनल, राइट। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रो इनका इवेंट है एंड 85.01 मीटर का इनका थ्रो रहा एट द डायमंड लीग। डायमंड लीग हुई कहाँ थी, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में हुई थी एंड नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे 2nd फिनिश किया। फर्स्ट किन्होंने फिनिश किया आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं जूलियन वेबर, जर्मनी के हैं। 91.57 मीटर का यहाँ पे थ्रो देखने को इनका मिला एंड ये आप 5 एथलीट देख सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पोजीशन। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ हैं। न्यूक्लियर टेस्ट को एक बैड चीज़ क्यों, क्योंकि इससे हमारे जो वर्ल्ड है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है एंड वर्ल्ड के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे हर कंट्री के पास, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है क्योंकि ये एक वेपन है मास डिस्ट्रक्शन का, राइट। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। 16th एडिशन हमने इस डे का ऑब्जर्व किया इस बार, सो टेक अ नोट ऑफ दिस। पहली बार इसको 2010 में ऑब्जर्व करा गया था। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स कुछ और वन लाइनर्स देखें, जैसे अगर हम अभी बात करें 87th ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के, वो है AR हरिकृष्णा। देन इटालियन कौन बने फर्स्ट इटालियन जिन्होंने विंबलडन जीता, जेनिक सिनर। देन फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया, चेल्सी के द्वारा जीता गया। फिर इसी के अलावा जूनियर नेशनल रग्बी 7th to 2025 किसके द्वारा जीता गया, बिहार के द्वारा जीता गया, अंडर 18 जूनियर नेशनल रग्बी। देन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के दौरान इंडिया ने कितने मेडल जीते, 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीते, राइट। फिर इसी के अलावा वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे 7 जुलाई, नेशनल शुगर कुकी डे 9 जुलाई, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे 10 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, मलाला डे 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। Identify the correct statement regarding the quarterly bulletin of the periodic labor force survey for April, June and monthly bulletin of periodic labor force survey for July। NSO के द्वारा इसको रिलीज किया गया। पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स एट UER एंड द्वारका, जो कि है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एंड फिर ये फर्दर कनेक्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, राइट। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। इन दोनों की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ की लागत से आती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट दैट साइंड अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट वर्थ 1 CR विद इंदिरा क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो ट्रांसफर करेगी इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड हाई स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। तो आइडेंटिफाई करो इस इंस्टीट्यूट को, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, इन अगस्त यूनियन कैबिनेट इन्होंने चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा कोटा बूंदी में, जो कि राजस्थान में है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया अपना टारगेट टू डेवलप एन एडिशनल 97 गीगावाट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी विच फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो इट इज बाय FY 35, दैट इज 34-35।
नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट, इन्होंने अभी रिसेंटली रोल आउट किया एक एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी सिस्टम जो कि 5,800 करोड़ की लागत से है अंडर इंडियाज आईटी टेक्नोलॉजी 2.0 प्रोग्राम। ये एक अपडेटेड वर्जन रहेगा आईटी 2.1 का, आईटी 0.1 का, ये अब 2.0 आ गया है, राइट। ये बेटर है, बेटर सर्विसेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी इससे, करेक्ट। बेटर, स्मार्टर, फास्टर, कस्टमर सेंटर पोस्टल सर्विस यहाँ देखने को मिलेंगी। तो नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंडिजीनियस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एपीटी सिस्टम, तो वो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस अमेरिकन सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर ने अभी कोलैबोरेट किया यूआईडीएआई के साथ ताकि आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन के ऊपर काम किया जा सके। तो कौन है वो है स्टारलिंक सैटेलाइट। इलॉन मस्क के द्वारा स्टारलिंक को ओन किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अथॉरिटी जिन्होंने ओपन किया 3 निर्वेशक सेवा केंद्रास हैदराबाद तेलंगाना में। इसके लिए इस कंपनी ने एनएससी, सेबी, सीडीएसएल, एनडीएसएल, एनएससी, बीएससी इन सब के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताओ, वो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्होंने 3 निवेशक सेवा केंद्रास यहाँ पर खोले हैं हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 5 साल का B2B अग्रीमेंट साइन किया विद ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल टू सप्लाई असेंशियल फर्टिलाइजर्स, राइट। तो मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 5 साल का B2B अग्रीमेंट यहाँ साइन किया, वो है नेशनल सीड सेंटर ऑफ भूटान। आई रिपीट, नेशनल सीड सेंटर ऑफ भूटान। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्टिंग सेंटर्स जीएसटी प्रपोजल इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि 5, 12, 18 और 28 स्लैब होते थे पहले जीएसटी के, अब उसको तोड़कर 5% एंड 12% कर दिया गया। तो 5% तो करा गया, 5 एंड 18 करा गया, ना कि 12। अब ऑप्शन बी भी सही है आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम आदि कर्म योगी अभियान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकरेक्ट पूछा, तो सभी में से ऑप्शन सी गलत है बस, जो कि हमारा आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पे आदि मित्र एंड आदि सारथी नहीं, बल्कि आदि सहयोगी एंड आदि सारथी, ये 2 यहाँ पे लाए गए हैं इनिशिएटिव्स, राइट। नेक्स्ट, UIDAI इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्रेमवर्क टू ऑनबोर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, जो एनेबल करेगा देम टू डिलीवर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को। नेक्स्ट, 12वां एडिशन ऑफ बायलैटरल स्लैनिक एक्सरसाइज देखने को मिली इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। लोकेशन पूछी जा रही है तो कोलंबो श्रीलंका में देखने को मिली। देन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इनके द्वारा अभी एक अग्रीमेंट साइन हुआ जो कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, मॉस्को रशिया में साइन हुआ। एंड इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया पार्ट हैं इसके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टू रशिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी एंड सी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस बैंक ने भी एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च की है अग्निवीर के लिए, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड 4 लाख रुपए तक का यहाँ पे वो लोन ले सकते हैं, कोलैटरल फ्री ये लोन रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन रिलीज्ड बाय एसबीआई इन अगस्त। अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ए सही है, सी सही है, बी गलत है। तो यूपी हैज टॉप्ड अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स इन यूपीआई यूसेज अकाउंटिंग फॉर 9.8% वॉल्यूम शेयर। तो यूपीआई नहीं, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स इन यूपीआई यूसेज। नेक्स्ट, अभी किसने इन कोलैबोरेशन विद विच पेमेंट कार्ड एंटिटी डिड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर लॉन्च किया टू कस्टमर्स प्रीमियम एंड रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट। सो इन अगस्त किन्होंने, तो एसबीआई कार्ड ने यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ पार्टनर करके ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया वर्थ $40 मिलियन। ये कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट है विद अफ्रीका बेस्ड इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, जो सपोर्ट करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस अफ्रीकन रीजन। ये लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हो सके। नेक्स्ट, अभी वो पहला इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बना जिन्होंने .bank.in इस डोमेन को अपनाया है ऑन द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। तो वो कौन सा बैंक बना पहला, वो है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्विसेज फॉर एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। मतलब इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप यहाँ पे
पेमेंट कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। तो मेंशन दैट बैंक, दैट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके द्वारा ये सर्विस लॉन्च की है। देन आ जाते हैं पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने साइन किया 150 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट विद जर्मनी के केएफडब्ल्यू इन अगस्त टू सपोर्ट इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर व्हाट, अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इन्होंने अभी एक $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, अनाउंस किया है ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड में, जिसका एम रहेगा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अक्रॉस एशियन अफ्रीकन रीजन एंगेज्ड है, उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट इन अगस्त सेबी ने एक्सटेंड की टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द प्रोसेस मार्जिन ऑब्लिगेशंस थ्रू प्लेज एंड रीप्लेज विद इन द डेपोजिटरी सिस्टम्स टू कब तक, ये है 10 अक्टूबर 2025 तक। राइट, ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आईसीआरए इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड, दे प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, तो 6.7% प्रोजेक्ट की गई है, लेकिन अभी देखो यूएसए के द्वारा इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसकी बदौलत हम देखेंगे कि कुछ परसेंट यहाँ पे जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकती है, ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स में ही यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड 28 अगस्त से ये लागू हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द फाइनेंस कंपनी, जिन्होंने सैंक्शन किया एक टर्म लोन ऑफ 199.7 CR टू सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर डेवलपिंग इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को सूरत गुजरात में। राइट, तो मेंशन दैट फाइनेंस कंपनी कौन सा है, वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट टू डेवलप व्हाट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यहाँ पे बनाने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया इन अ ग्रांड फिनाले, जो कि जयपुर राजस्थान में हुआ। तो मनिका विश्वकर्मा, इनको मिस यूनिवर्स इंडिया से सम्मानित किया गया। अब ये 74th मिस यूनिवर्स इवेंट जो होगा थाईलैंड में, उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं, नवंबर के महीने में होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट National Cooperative University will be set up where? Second question, tell me recently, if I ask you Digi Lakshmi scheme, this was launched by whom and by which state and why was this launched? Third, Poverty Free Village scheme, this was launched by whom and why was this launched? Fourth question, which is the first Amazon country that was declared malaria free by World Health Organization? Fifth question, tell me recently what is the rank of India according to World Bank in the world's most equal societies? So what is the rank of India here? And sixth question, name the countries that has joined the new development bank of BRICS. 2 countries have joined, name them. So that's all for the day, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.